Hello everyone. Good morning children. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ for this special session which has been specially designed for class 6 as usual. I am Mrs. Anantbir Kaur Chima, English mistress, presently posted at Government Senior Secondary Smart School, Nanpur Kesho, District Patiala. So प्यारे बच्चों, एक बार फिर आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ ग्रामर जो कि बहुत विशेष है। मैं क्यों यह शब्द ते इन्ना जोर लगाया विशेष, क्योंकि आज दा साडा टॉपिक ही विशेषण है, मतलब adjectives. So this is specially designed for class 6 and the topic of discussion today is adjectives. So ਬੱਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। As you know we have nouns, ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ that every or anything created on this earth, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ उसका कोई ना कोई नाम है, क्योंकि वो एक नाम है। टेबल, चेयर, टीचर, स्टूडेंट, निर्जीव या सजीव कोई भी वस्तु, anything living or non-living on this earth created by God or created by man is called noun. और हर नाउन दी एक विशेषता हुंदी है। Every noun has an important aspect, and to describe this important aspect of a noun's characteristic, we have special words called adjectives. जिवें कि अगर मैं कहा यह एक लड़का है, he is a boy, तो एक नॉर्मल जी गल है कि एक लड़का है। अगर मैं उस लड़के दी विशेषता दसनी होए और मैं कहा he is a naughty boy, यह एक शरारती लड़का है, ਤਾਂ लड़के दी विशेष गल ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ शरारती है। I think ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੱਕ introduction ਨਾਲ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਗੀ what is adjective, but still it is my duty to give you a proper definition. So what are adjectives? Adjectives are words that describe the qualities or states of being of nouns: enormous, beautiful, silly, yellow, fun, fast. They can also describe the quantity of nouns: many, few, millions, 11. एक बार असी फिर पहली लाइन ते निगाह मार दें। Adjectives are words that describe the qualities or states of being of nouns. ठीक है, क्वालिटी दर्शाते ने कि किस तरह का वो नाउन है। अगर मैं कहा elephant is an animal, elephant is an enormous animal. elephant एक जानवर है, पर elephant एक विशाल जानवर है। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, my teacher is very beautiful. So what makes your teacher important? That she is very beautiful. Okay, in the same way they are saying ਕਿ ਅਸੀਂ measurement ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ adjectives ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। They can also describe the quantity of noun. There are many girls in the class. Girls plural noun. But what is making the girls special? That there are many girls. इसी तरह अगर मैं कहा I have a shirt, मेरे कोल एक कमीज है, पर ओदी अगर मैं विशेषता दसनी होए तो मैं कह सकती हाँ I have a pink shirt, मेरे कोल एक गुलाबी रंग दी कमीज है। ਤਾਂ ਉਹ कमीज दी विशेषता की है कि वह गुलाबी है। To demonstrate how adjectives work, let's look at two example sentences. The first sentence has no adjectives and the second sentence
has two adjectives. ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ एग्जाम्पल्स ने, एक सेंटेंस विच कोई एडजेक्टिव नहीं है, दूसरे सेंटेंस विच दो एडजेक्टिव्स ने। चलो असी पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। लेस्ली बॉट शूज एट द स्टोर। लेस्ली ने स्टोर तो जुत्ते खरीदे। लेस्ली बॉट न्यू शूज एट द बिजी स्टोर। हुण दोनों की एक विशेषता दसी गई है। लेस्ली बॉट न्यू शूज, लेस्ली ने नवे जुत्ते खरीदे। एट द बिजी स्टोर, बहुत ज़्यादा बिजी सी वो स्टोर, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी सी उत्थे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू प्लेस एडजेक्टिव्स। मोस्टली बेटा एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द नाउन्स। मोस्टली जिहड़े एडजेक्टिव्स ने नाउन तो पहला लगते हैं, पर बाद भी तुसी लगा सकते हो, बट इन्हां दी पहचान यही हुंदी है कि मोस्टली नाउन्स तो पहला लगते हैं। ओके, वॉट इफ देयर वर नो एडजेक्टिव्स? की हुंदा अगर विशेषण ही ना हुंदे? तुसी दसो सोच के, की हुंदा कि अगर विशेषण ना हुंदे? मज़ा ही ना आउंदा पढ़न च, किसी चीज़ की विशेषता बारे ना सानू पता लगता। हुण अगर 10 बच्चे खड़े ने, ठीक है, मैं किसी बच्चे बारे स्पैशल कुछ कहना होए तो जे एडजेक्टिव ना यूज़ करा, अगर मैं विशेषण ना यूज़ करा, तो फिर मैं 10 बच्चों चो उस बच्चे की विशेषता दस के उसनों सब तो इंपॉर्टेंट किवें बनाऊंगी? किन्नी एदा वो मतलब हो गया कि मसाले बिना सब्जी, सब्जियां तो फिर सारी एक बराबर ने, सब ची नमक पाऊगा, सब ची हल्दी पाऊगी, सब ची मिर्च पाऊगी, पर वो एक फ्लेवर जिहड़ा आउंदा हैगा ना सब्जी च, असीं कहने अज तां सब्जी बिल्कुल ढाबे वर्गी बनी। ਉਹ क्यों यह जिहा फ्लेवर आउंदा? असी एंड ते उस चीज़ के उपर सुक्की मेथी पाउने आ या असी गर्म मसाला पाउने आ, जस्ट टू गिव अरोमा, फ्लेवर। इसे तरह ही अगर आप प्लेन 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 लैंग्वेज बोली जावांगे, उहदे च कोई अरोमा ही नहीं होगा, कोई फ्लेवर ही नहीं होगा, ब्लैंड होगी, बकबकी लैंग्वेज है ना। सो उन्हें इंटरस्टिंग बनाने वास्ते सानू एडजेक्टिव्स यूज़ करने होंदे ने। पर चलो आप देखते हैं कि बट if there were no adjectives ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? if there were no adjectives, अगर विशेषण ना ਹੁੰਦੇ, things would have been difficult to describe। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ डिस्क्रिप्शन देनी, ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ बहुत मुश्किल हो जाना सी। we would not have been able to frame sentences properly। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ अच्छे तरीके नाल। क्यों नहीं सी होनी अच्छे तरीके नाल सिरजना? क्योंकि असी केंद्रित ही नहीं सी कर सकना ध्यान नू नाम वाल। We would have not been able to draw attention of the reader towards the noun। रीडर नू पता ही नहीं लगना कि मैं सेंटेंस च केड़ी चीज़ दे उत्ते जोर पाउणा है, मैं केड़ी चीज़ दा ध्यान रखना, what is important in the sentence, है ना। Okay, so we would not have been able to frame sentences properly। if there were no adjectives, we would not have been able to find the quantity and quality of the nouns used in our daily lives। सानू ना ता मात्रा अते ना ही क्वालिटी पता ही नहीं सी लगनी नाउन्स दी। हुण मात्रा दी की विशेषता है? सपोज करो अगर मैं कहा आई हैव आईज, ठीक है, सब दे आईज होंदियां ने, पर अगर मैं कहा आई हैव 2 आईज, जरूरी तो नहीं, हुण कईयां दी कख नहीं होंदी। असी अगर किसी का ध्यान किसी कल केंद्रित करना तो फिर सानू विशेषता तो दसनी पैनी है ना। सपोज करो अगर 2 इंसान खड़े ने, एक थोड़े सामले रंग का, एक थोड़ा गोरा है, तो अगर असी उन्होंने इंट्रोडक्शन अगर किसी नू, मतलब इंट्रोडक्शन तो नहीं, अगर किसी नू उन्होंने बारे दसना होए, किसी नू 2 जने सामने खड़े होना, आप कई बार दूरों कहना होंदा कि यार वो जिहड़े 2 खड़े ने ना, मैं उहदी गल कर रहा जिहड़ा उहदे विचों सांवला है जां जिहड़ा उहदे विचों गोरा है ना। तो वी कैन से आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज़ फेयरर बिटवीन द 2, दोनों विचों जिहड़ा थोड़ा गोरे रंग दा है, और who's a little dark in complexion, जो थोड़ा बहुत सांवला है ना। ईजी कितना हो गया डिस्क्राइब करना। हुण 10 जने खड़े ने, अगर मैं कहना होए मैं ओ बंदे दी गल कर रही हाँ,
जो सब तो ज़्यादा लम्मा है ना। अगर मैं लम्मा ना कहा ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨੋ I will say that I'm talking about the person who is the tallest amongst the all, who is the tallest, है ना। ਤਾਂ tall भी noun ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ that he is a tall boy, she is a beautiful girl। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣੀ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਸ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਫਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਹੈ with the help of adjectives, that the class has been decorated beautifully, they have neatly done the class, they have made beautiful lamps, the children have beautifully decorated the class with utterly amazing charts। देखा कितना easy हो गया describe करना adjectives नाल। Okay, so what are quality adjectives? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ words mention ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ quantity based adjectives ਤੇ quality based adjectives। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਲਗਾ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। Adjectives of quality give more information about the quality of a thing or person. We use an adjective of quality to describe the subject or noun. Following are some examples. So, adjectives of quality give more information about the quality. किसी चीज़ दी quality, जिवें मैं थोनू दस्या सी कि she sings beautifully, है ना, वो quality होगी ओदी। And we use an adjective of quality to describe the subject or noun. ਤਾਂ obviously ਅਸੀਂ noun ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ word use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। He is a clever boy, बड़ा ही चलाक लड़का है, क्वालिटी की होती बड़ा चलाक है। He is a nice guy, वो बड़ा ही अच्छा मुंडा है, कहजा मुंडा है, अच्छा है। Japan is a developed country, डेवलप ਦਾ मतलब कि बहुत ज़्यादा तरक्की ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ, है ना, तरक्की ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਈ। Sarah is a beautiful girl, बड़ी ही खूबसूरत लड़की है, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਇੱਥੇ खूबसूरत, beautiful। My boss is an honest person, ईमानदार, मेरे बॉस एक बड़े ही ईमानदार इंसान ने। This box is heavy, यह बक्सा बहुत भारी है। Nana has a black dog, नैना कोल एक काला कुत्ता है, कुत्ते दी विशेषता क्वालिटी की है कि वो काला है। She is an intelligent girl, बहुत ही ज़्यादा intelligent, intelligent की हुंदा है बहुत ज़्यादा दिमागी है, तब बहुत ज़्यादा हो intelligent girl है। Mumbai is a beautiful city, मुंबई एक बड़ी ही सुंदर सिटी है। Our principal is an old woman, साडे जेडे प्रिंसिपल मैडम ने थोड़े बुजुर्ग ने। And then New Delhi is a big city, नवी दिल्ली बहुत विशाल शहर है, ठीक है। So you see that they have been darkened, dark किते हुए ने words जो adjectives ने, clever, nice, developed, beautiful, honest, heavy, black, intelligent, beautiful, old and big। So as usual every lecture I say that when I am speaking these words, जब मैं ये words बोल दी हैं, then I expect you
to pick up the correct pronunciation. ठीक है, कोशिश करा करो बोलन दी, बाचो वर्ड्स नू दोहराया करो ताकि थोड़ी pronunciation correct होए. Okay? What are quantity adjectives? Just in the same way we have quality adjectives, जो किसे दी quality बारे दसते ने. In the same way we have quantity adjectives. Quantity means मात्रा दे आधार ते किन्ना. ठीक है. Adjectives of quantity give information about the quantity of a thing. किसी चीज़ दी किन्नी मात्रा है, उस चीज़ दी जो विशेषता दसदे ने उन्हें quantity based adjectives. These quantity telling words give information to us about the number of nouns. ठीक है, जिवें असीं कह दिंदे प्लोरल है, सिंगुलर है, बट वो ऑब्वियसली तुसीं काउंट करदे हो तां ही तुहानूं पता लगदा ना. They do not tell the exact number. सानू बिल्कुल exact number तां नहीं पता हुंदा. Following are some examples. I took some notebooks. मैं कुछ किताबां लित्तियां. हुण कुछ 4 भी हो सकदियां ने, कुछ 5 भी हो सकदियां ने. So we just round up a quantity adjective and we put some. They had enough plates. बथेरियां प्लेटां सी. हुण वो बथेरियां च 100 भी हो सकदियां ने, बथेरियां च 50 भी हो सकदियां ने, बट बथेरियां प्लेटां ने. किन्नियां प्लेटां ने? बथेरियां. ठीक है, तो that is quantity based adjective. He gave me all his pens. उसने मैनू सारे पेन दे दिते. सारियां च 10 भी हो सकते ने, सारियां च 9 भी हो सकते ने, बट असी उन्होंने collectively कह दिता all. He gave me all his pens. He has no qualification. ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ कोई भी qualification नहीं है. तो कोई भी नहीं है तो no. You did not take any books. तुसी कोई भी किताब नहीं लिती, ना 1 लिती, ना 2 लिती, कोई भी नहीं लिती. Many students were present today. बहुत सारे बच्चे आज आए हुए सी. हुण बहुत सारे 42 भी हो सकते हैं, बहुत सारे 32 भी हो सकते हैं, बहुत सारे 10 भी हो सकते हैं. I have completed most of my work. मेरा मैक्सिमम काम हो चुका. Most of my work. मैं ज़्यादा तो ज़्यादा काम कर लिया. ज़्यादा तो ज़्यादा हुण अद्धा किलो पौना किलो एवें नहीं हुंदा. काम दा जिहड़ा काम दी मात्रा है ओह most या much, little, some of my work एवें ही हुंदी है. ओके. Then baby ate the whole banana. बच्चे ने सारा बनाना खा लिया. ठीक है, हुण आपां इह तां नहीं कहंदे पौना केला खा लिया, सवा केला खा लिया. The whole banana, सारा बनाना खा लिया. I don't have much time. मेरे कोल बहुत ज़्यादा समा नहीं हैगा. ठीक है. Sam has little interest in drawing. Sam दा drawing करन विच बहुत थोड़ा interest है. ਤਾਂ some, enough, all, no, any, many, most, whole, much, little. So these all are quantity based adjectives. Then we have demonstrative adjectives. बेटा यह word demonstrative नहीं हुंदा. बहुत लोग इनू demonstrative बोलते ने. उदा reason ये हुंदा, मैं extra bit of knowledge I always give you. English is not our language. We adopted this language from the Britishers. ਤਾਂ उस टाइम ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਕੜਦਾਦੇ forefathers ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਰਨ ਨੇਟਿਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋਈ ਗਿਆ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਰਡਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਬਟ these lectures, they are being telecasted, they are being delivered to make you more perfect, है ना. ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ. No, our motive is to give you best education. So if we are pronouncing these words, we expect ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ words properly ਬੋਲੋ.
So this word is demonstrative. 5 बार बोलोगे आ जाएगा बोलना. Demonstrative, demonstrative. Adjectives. Demonstrative adjectives are special adjectives used to identify or express the relative position of a noun in time or space. A demonstrative adjective comes before all other adjectives in the noun phrase. Following are the examples. ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? Relative position of a noun in time or space. ਕਿਸੇ noun ਦੀ specific ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ. ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਡਿਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਦਿਸ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਔਰ दैट वन. ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕੇਕ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਕ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਦਿਸ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੀਸ दैट. ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ. ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੇਕ 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 ਕਿਹੜਾ ਕੇਕ. ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ. Did you want this piece of cake or that piece of cake? Do those dogs live here? ਕੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? Yes, these dogs live here. ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ. This book is my favorite. ਇਹ ਮੇਰੀ favorite ਕਿਤਾਬ ਹੈ. I've never read that book. ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ. How much are these earrings? ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ? Those earrings cost ₹100. ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ? Okay. Now we have adjective of number. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ. ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੇਸਡ. ਦੂਸਰਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬੇਸਡ. ਤੀਸਰਾ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ. ਐਂਡ ਨਾਓ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਨੰਬਰ. ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬੇਸਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਮ, ਫਿਊ, ਮਚ, ਮੋਰ, ਲਿਟਲ. ਐਂਡ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. An adjective of number is an adjective that tells exactly how many or how much of something there is. ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਬੋਲਾਂਗੇ. It differs from an adjective of quantity. ਇਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਾਲੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ. That references a quantity of something that cannot be counted. ਉਸ ਵਿੱਚ quantity count ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ quantity count ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 1 ਦੁੱਧ 2 ਦੁੱਧ 3 ਦੁੱਧ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਾਂ some milk, half a glass of milk, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ quantity 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਟ adjective of number 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ precise ਮਾਤਰਾ, the number countable ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. So let's look at the examples. Every boy in the class can count to 100. ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? 100. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ adjective of number ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? 100. There is 1 piece of pizza left. Those 7 selected girls should report to the gym for PT. Third place goes to Mary. It was a gallon jug that was needed to hold the water. Could you bring me 40 paper clips? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ mentioned ਹੈ particular 100, 1 piece, 7 selected girls, third place ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, gallon ਤਾਂ gallon ਵੀ particular liters ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 40 paper clips 40. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? adjective of number. Then we have interrogative adjectives. Interrogative ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ sentences ਹੁੰਦੇ ਨੇ simple ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, then we have interrogative ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ. ਤਾਂ adjectives ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. An interrogative adjective describes a noun that is used in a question
Interrogative adjectives include the following words: what, which, whose. Following are some examples. Whose book was that? किदी सी हो किताब. अच्छा, अक्सर बच्चे गलत पंजाबी गलत बोल दे, इस करके इंग्लिश भी गलत बोल दो. पंजाबी गलत लिख दो, इस करके इंग्लिश भी गलत लिख दो. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਤੁਹਾਡਾ yours, ਨਾਮ name, ਕੀ what ਹੈ is, ਹੈ ਨਾ. ਸਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, what is your name. सही पंजाबी बोलोगे, इंग्लिश ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी. Okay, let's look at the interrogative adjectives. Which pen do you like more? What books are you buying today? Which book on proofreading do you recommend? Which team scored the higher in the last match? Which player did you get a 50 yesterday? What recipe did you choose to make this dish? Which bat is Watson's? Okay, so now these are the interrogative adjectives: whose, which, what, which, what, which. Okay, प्रश्नवाचक ने ये तो बहुत ईजी ने याद रखने. तो एक बार ਆਪਾਂ फिर देख लिए की सीगा quality based, quantity based, demonstrative, then numbers, then interrogative, and then we have possessive. The possessive adjectives are my, your, his, her, is, are, their, whose, है ना. Pronouns type कह सकते हो तुसी. A possessive adjective sits before a noun or a pronoun to show who or what owns it. My computer is not working as fast as it worked in the beginning. मेरा, तुहाडा, साडा, ये सारे की ने possessive adjectives. Our father told us not to quarrel with anyone. Your cycle has been stolen yesterday. Your child is not doing well in the school. I could not understand her intentions. We are concerned about his performance. Her thoughts are too complex. My mind stops working when I think about that. Stop messing with my hair. ठीक है बेटा. हुन देखो तुसी my, our, your, we, I, my, her, my. These all are possessive adjectives. So we had framed an exercise for you. Quickly have a look. Fill in the blanks with the given adjectives of quality. First 2-3 मैं थोनों एक बार करवा देनी है, and then you try on your own. Prabha has a dash voice. ऊपर देखो, melodious, मिठी आवाज. The mangoes are dash and dash. की होएगा? Ripe, बड़े होए होए ने, पक्के होए ने, and ripe दे नाल की होएगा? Sweet, मिठे भी बहुत ने. The car stopped suddenly. It had a देखो flat tire. ठीक है. तो इसी तरह आगे तुसी खुद fill up करके देखियो. And then again we have another exercise. Put in the correct adjective of numbers in the sentences. Let's do one. There are dash days in a week. ता अखा बंद करके सी कह सकते हैं 7. And octopus has, ये तो मैंने भी नहीं पता, how many arms, अपने मैम नु पूछियो. There are dash months in a year, 12. Okay. So identify the adjective of quantity. ये तुसी अपने आप इनो identify करना है. तुसी ये दे चो लबना है कि adjective of quantity. जिमें कि 6th sentence देखो. There are plenty of milk. है ना? Plenty. Then we have a look at the 10th sentence. A 20% tip will be sufficient. 20%. Fill in the blanks with demonstrative adjectives. Will all dash people attend the ceremony? Will all these people? And then interrogative, dash is the time. What is the time? Dash shoes are they? Whose shoes are they? And then possessive, I have got a dog. This is my dog. And then you have got a present. You have got a present. This is your present. Okay, so we come to the end.
Today we did in a hurry. We were running little bit short of time, but I tried my best to explain each and everything. The exercises I could not do whole of it with you, so I left little bit of you for do as homework. But I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। And next time again I will get something very interesting for you. Okay? So see you soon. Thank you so much.